Hello and welcome back everyone to the Into the Rabbit Hole podcast. I am Fye. Joining me is Terren. Hello. There he is. We are back again with another episode. This time we are going to talk about some superpowers. Yes. If they are possible, and let's just say what are their pros and cons and everything related to that power. Yes. But usse pehle again, if you have anything that small tidbit you want to talk about, or should we move into the topic directly? अभी मैं वो देखा, I just watched that. कौन सा Netflix movie था वो? Netflix again. God damn. अरे वो Wednesday को ही आया है. Benedict Cumberbatch का Wes Anderson movie. Henry Sugar, something Life of Henry Sugar. Wonderful Life, Wonderful. I don't know, sir. I haven't been up. Wonderful. Yes, the wonderful story of Henry Sugar. It's like 40 minutes का ऐसा short movie type का है. मतलब फिल्म है पूरा, ऐसा actual फिल्म है, but 40 minutes का छोटा सा है. And वही Wes Anderson style, collage style बनाया है पूरा. अच्छा मूवी है actually. काफी like मेरे को स्टोरी अच्छा लगा. सिंपल सा स्टोरी रखा, कुछ ड्रामा नहीं फालतू का, एक्सप्लेन किया. Like wholesome feel good movie. जी. नहीं, feel good बिल्कुल कुछ नहीं है. सिंपल स्टोरी है, like ऐसा स्कूल में वो होता था ना, ऐसा शॉर्ट स्टोरीज की एक बुक होती थी, लाइक करिकुलम में से 5-6 शॉर्ट स्टोरीज होता था. I know. ठीक है, तो उसमें से एक किसी शॉर्ट स्टोरी को उठा के अगर मूवी बना दो, उस टाइप का है कि लाइक ज्यादा कुछ प्लॉट नहीं है, छोटा सा प्लॉट है, ऐसा खत्म हो जाता है 5 पेज में. Okay, got it. It's like a short, but it's like just a story. हाँ, yes, actually किसी शॉर्ट स्टोरी का अडेप्टेशन है. एक्चुअल कौन सी, अच्छा, क्या नाम था उस वन में, एंडी हॉल अडेप्टेशन नहीं, रोअल्ड डॉल, स्टोरी बाय रोअल्ड डॉल, ब्रिटिश राइटर. ठीक है, इसने ये सब लिखी है. चार्ली द चॉकलेट फैक्ट्री, मटिल्डा, फैंटास्टिक मिस्टर फॉक्स, ये सब इसी का है. nice. तो इंटरेस्टिंग स्टोरी था, मतलब लाइक इतना कुछ ज्यादा ऐसा कॉम्प्लिकेटेड सा प्लॉट नहीं है, बहुत सिंपल सा प्लॉट है. एंड कास्ट काफी अच्छा है, लाइक बहुत महंगा कास्ट है. ज्यादा महंगा भी नहीं कहूँगा, बट लाइक रिलेटिवली काफी फॉर अ 40 मिनट मूवी. कास्ट अच्छा था, लाइक बेनेडिक्ट कम्बरबैच, देव पटेल, बेन किंग्सली, actual actors. हाँ, yes. And Wes Anderson. Yeah. I think Wes Anderson खुद ने प्रोड्यूस किया ना. हाँ, खुद का पैसा लगा है, इसलिए. It's okay. Basically उसका अपना प्रोजेक्ट होगा फिर पूरा. So it's a passion project. Yes. I'll add that to the list. I'll watch it. ऐसा मील मूवी है, लाइक लंच डिनर के टाइम देख लो. 40 मिनट डिनर नहीं कर सकता ना. मतलब ऐसे दो मील्स में हो जाएगा यार. Okay. थोड़ा लंच देख लो, थोड़ा डिनर के टाइम देख लो. ऐसे भी मूवी में भी दो पार्ट्स है, सॉर्ट ऑफ दो अलग स्टोरी है. नहीं होता सेम स्टोरी कनेक्टेड, छोड़ो यार, बट हाँ है. Yes, so the wonderful story of Henry Sugar, must watch. अच्छा. Nice. You watched a movie again. Thank you, Netflix. I have a small update. You know about it. I put it on my Instagram, so you know it. I did something. Okay. Oh, yes. The journal. Let's go. I woke up after a dream, went back to sleep, and continued the dream. Yes. That does not sound that amazing, but please understand, listeners. मैं डिफरेंट है. मेरे को सपने नहीं आते हैं. मेरे पास एक जर्नल है, एंड ऐसा पिछले 4 साल में this was the 26th dream that I had. I have written every dream
and it's not possible for me that once I wake up मैं वापस सोने जाऊँ और वापस मेरे को नींद आए. पहली बात तो नींद आ जाए, दूसरी बात सपना आ जाए. It's very rare for that to happen. So when that actually happened, मैं ऐसा उठा, सोने गया, सपना देखा, वापस उठा, I like genuinely woke up smiling. Great moment for me. So that was my you week. continued the same dream, ना? हाँ, exact same dream जहाँ पे मैं छोड़ा था, exact उसी point से. It was like I had control over it. Yes. So ऐसा from the people who dream a lot, ऐसा dream a lot मतलब ऐसा literally dream a lot, ऐसा aspiration वाला बता देना, ठीक है? तो like मेरे को ऐसा on an average ऐसा हर दूसरे दिन या तीसरे दिन ऐसा कुछ ना कुछ weird सा सपना आता है, ठीक है? So it's I think बहुत ज्यादा डिफिकल्ट टू कंटिन्यू द ड्रीम, ठीक है? मेरा भी ऐसा बहुत बार हुआ है कि लाइक मैं बीच में उठ गया एंड आई वांट टू कंटिन्यू, नहीं होता, कभी नहीं हुआ मेरे साथ, ठीक है? सो अगर तू सेम सपना कंटिन्यू कर पाया है, Yes. तो आई थिंक तू कभी उठा नहीं, तू सपने में उठा. मेरे को ऐसा लग रहा है. Here's the thing, sir. I woke up, I wrote down the dream. I usually write it down by phone, notepad में लिख लेता है. Because ये मेरा गारंटी है, अगर मेरे को सपना आया तो इट्स अ वेरी रेयर इवेंट इन माय लाइफ एंड मेरे को लिखना है. I can't miss that. So I wake up, I write and मतलब ठीक है, मैं वैलेंट का स्टोर चेक किया, सो गया फिर से. Don't question my sanity, please. मैं सुबह उठ के वही करता है. Yes. आज ना ऐसा घर में हुआ है क्या कुछ ऐसा वंदरवार? पता है क्या होता है? मेरे घर पे भी कोई नहीं है, so just अरे घर पे ऐसे वंदरवार जो ऐसा दरवाजे पे लगाते हैं as a decoration. Some people might call it something different. I am sure I know it, but maybe like, it's called something different. हाँ, it's like मेन गेट जो था घर का, उसके जस्ट ऐसा ऊपर लगाते हैं, डेकोरेटिव सा होता है, ऐसा बेल्स वगैरह होती हैं कुछ कुछ उस पे. Okay, yes, I know what you're talking about. टासल्स वगैरह होता है, ठीक है? उस टाइप का कुछ है क्या? हाँ. उसको ना ऐसा आज पैर पे बांध के सोइयो, ठीक है? जस्ट टू चेक दिस स्लीप वॉकिंग तो नहीं कर रहा है. नहीं, डेफिनेटली नहीं. मेरे को एक एक्चुअली सपना आया था जिसमें मैं नींद में टाइप कर रहा था, बट वो सपने के अंदर था. सो इस सपने के अंदर मैं सो रहा है एंड मैं उस सपने के अंदर जो सपना आया था मैं उसको टाइप कर रहा है. बहुत वियर्ड था. मेरे को ज्यादा याद नहीं एग्जैक्टली that is some inception level stuff. मेरे साथ बहुत सिंपल इवेंट हुआ. उतना घूम फिर नहीं जाना उसमें. इंसेप्शन में एटलीस्ट उनको ऐसा होश था. मेरे को कुछ याद नहीं, बस मेरे को याद है कि लाइक मैं ऐसा सपने में टाइप कर रहा सपने के बारे में. ऐसा होता है ना, सब कुछ फ्रेम्स याद रहते हैं स्पेसिफिक, याद है मेरे को, बस बाकी नहीं. तो यस. Okay, so moving on from the simple stuff to not so simple stuff. Superpowers. Yes, it's Ben 10 time. Ben 10 time, yes. We have a list of a few superpowers. Let's start with the first one that I think is depicted most of the times, या फिर सबसे ज़्यादा popular I think pop culture में. Invisibility. Let's just start with that. We should start off with if invisibility is possible, I think, or should we start off with something else? Possibility का we can't ऐसा say because like possible तो actually कुछ नहीं है. But, okay, if you had to do something to make invisibility a real thing, how would you approach it? Because normally दो टाइप के होते हैं ना. I'm just cutting you right just to complete my sentence कि normally दो टाइप के depictions में होता है. जैसे हैरी पॉटर में दिखाया था like the cloak one, a material that you use to cover yourself, या फिर invisible man type, पूरा ही गायब, hollow man. तो invisible actually बुक का नाम क्या था? invisible man. हाँ, the invisible man. H.G. Wells. Hollow Man is a movie.
that based on the same concept. Yeah. See, if we are going with this a superpower, तो I think Invisible Man type का कुछ होना चाहिए. Because cloak is just a tool. It's like temporary power. Batman versus Superman हो गया. Yes. ठीक है. तो So Batman नहीं बनना. if we go like to that solution तो नहीं बोलेंगे. If we don't go to that length to make someone completely invisible, physics थोड़ा गुस्सा हो जाता है. Do we want to go into the science of it अभी या फिर you want to stay away from that discussion? I mean, we can, मतलब, I don't know, people would be interested or not. Because like, physics की तो लगने वाली है अभी at this point. हाँ, because superpowers की बात कर रहे हैं. Okay. Because if we were just talking about like वो cloak वाला thing, तो that stuff is, I think, is still, I would say, थोड़ा बहुत possible because there have been materials like जो light को refract करते हैं in such a way that if you stand behind that object, तो you're not completely visible. तुम्हारे पीछे वाला जो भी background होगा is kind of visible through the material. So it does not make you invisible completely, but hides you in plain sight, I would say. Yes, close enough. Basically, invisible होने के लिए you have to be 100% reflective. ये तो बस जैसे disco ball बनना है. Basically, you have to be. Okay, physics. I don't like physics, but here we go. Reflective or transparent? My bad. Reflective नहीं. Reflective होके then you basically, can spot them. ऐसा photons को तुम्हारे through जाना पड़ेगा या फिर तुम्हारे around जाना पड़ेगा. Basically, you can't let them reflect off you. That sounds again impossible. हाँ, through का बहुत issue है. And if it goes through, तुम कैसे देखोगे किसी को? That's the question. You are invisible, but you are blind. वो तो देखो, that is separate topic. कि लेगा एक बार invisible हो गया तो क्या issues आएगा? Okay, we are just we are just approaching कैसे होता है. ठीक है. हाँ, how to get the person invisible. So again, I'm thinking something like ऐसा. So बहुत ज्यादा ऐसा टेक्निकल हो जाएगा, बट ओके, go on, teach me. ठीक है. सो वो तो अभी जब हम लोग जब सेकेंड ईयर में थे, थर्ड ईयर में थे, तो ब्लैक होल्स की एक्चुअल फोटोज आई थी. हाँ, 22 था. हाँ, यस. सो यू कैन सी ऐसा उसपे एक डिस्क होता है. है ना? यस. सो एक ऐसा हॉरिजॉन्टल डिस्क है, एंड फिर जो ब्लैक होल है उसके अराउंड एक ऐसा डिस्क होता है, एक ऐसा वर्टिकल सर्कल दिखता है. Yes. है ना? एक लूप दिखता है. Yes, एंड yes. ऑब्वियसली एक सैटर्न टाइप का रिंग दिखता है. सो जो वो लूप है, जो सर्कल दिखता है बेसिकली अराउंड द ब्लैक होल, एक्चुअल विजिबल पार्ट, हाँ, वो उधर नहीं है. दैट इज लाइट जो ब्लैक होल के पीछे है. ठीक है, वो बेंड होके उधर दिख रही है अपने को, बिकॉज ब्लैक होल लाइट को बेंड कर रहा है. यस, मेक्स सेंस. हाँ, तो बेसिकली एक ब्लैक होल है, उसके अराउंड एक सैटर्न जैसा डिस्क है, एक्रीशन डिस्क. ठीक है. सो जो आगे है वो तो अपने को दिख रहा था, जो हॉरिजॉन्टल पार्ट है. जो पीछे साइड है ब्लैक होल के, वो अपने को ऊपर दिख रहा है, बिकॉज लाइक लाइट बेंड होके ऊपर से आ रहा है. काइंड ऑफ मेक्स सेंस. यस, आई एग्री. बस आगे का कैसे ही दिखाई देगा. सही बात है. हाँ, तो मोर और लेस ऐसे ही करना पड़ेगा, बिकॉज थ्रू तो नहीं जा रहा लाइट. यू हैव टू ऐसा. ओके, इफ यू आर सेइंग कि ठीक है तेरे अराउंड जा रहा है, था व्हाट यू आर सेइंग इज कि बेसिकली इट ऐसा काइंड ऑफ लाइक गोस एवरीवेयर. लाइक तू खड़ा है तो तेरे अगल बगल से निकल जाएगा लाइट विदाउट एवर इंटरेक्टिंग विथ यू और योर बॉडी. यस, बेसिकली जो भी ऐसा लाइट रेज मेरी तरफ आ रहा है, दे हैव टू बेंड अराउंड मी टू मेक मी इनविजिबल. That again, okay, ठीक है, that I think will
cause another issue, I think. I am thinking, जो कि बाद में होगा. डिस्टॉर्ट हो जाएगा सब. हाँ, exactly. You won't be actually invisible. एक ऐसा आउटलाइन दिखाई देगा तेरे अराउंड अलग से. यस. तो वही अगेन उस डिस्टॉर्शन को मैनेज करना पड़ेगा. तो अरे अभी दिस इज मोर ऑफ ऐसा रोबोटिक्स प्रॉब्लम. तो बेसिकली क्या हुआ अब? तो संदन के कोर्स में था क्या? सर मैं बहुत दूर रहा है तुम्हारे पूरे ब्रांच से. ठीक है. बस संदन के कोर्स में बहुत लोग था, तो मेरे को याद नहीं कौन कौन था. आई जस्ट डिड एक मजाक बस, और कुछ नहीं. अच्छा हाँ वो ओके यस फजी. हाँ नेवर माइंड. नथिंग कुछ नहीं एल्स. था. बेसिकली अभी क्या हो रहा है, तो लेट्स से एक पीछे ऑब्जेक्ट के पीछे कुछ बैकग्राउंड है. ठीक है, मेरे को बैकग्राउंड देखना है आगे. ठीक है, एंड लाइट रेस ऑब्जेक्ट के अराउंड बेंड हो रही है. सो लेट्स से अभी कुछ भी रैंडमली अगर बेंड हो रही है, ठीक है, तो वो डिस्टॉर्टेड सी इमेज दिखेगी कुछ. सो ये अब एक ट्रांसफॉर्मेशन है. मैं बहुत ज्यादा टेक्निकली बात कर रहा हूँ बट हाँ ठीक है. बेसिकली दिस इज व्हाट दे डिड ना, जब they made the वो invisibility cloak वाला जो कॉन्सेप्ट था. This is what they did actually. Yes. It's called, I'm looking it up, it's called, कहाँ गया? It's a lenticular lens. It's a corrugated sheet in which each rays is made up of convex lenses, and it's arranged in such a way that kind of makes it see-through, as well as at the same time it hides you if you go through it, if you go behind it. वही ये बहुत ऐसा हाईली रिफ्रैक्टिव मटेरियल है, लाइट बेंड कर रहा है. सो आई वांट दिस बट बहुत ज्यादा. You want this but naturally happening without any material. हाँ मटेरियल भी हो इट्स फाइन. Basically you need this material का coating तुम्हारे ऊपर something, but बहुत कॉम्प्लेक्स प्रॉब्लम हो जाएगा ये. बस अभी लाइक फॉर एग्जांपल मटेरियल मेरा अराउंड है बट मटेरियल कंसिस्टेंट नहीं होगा विद एज यू गो फार फ्रॉम मी. उसका से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स चेंज होगा, मटेरियल्स की प्रॉपर्टी चेंज होगी, बिकॉज़ जो पास में है इट हैज टू बी मोर बेंडी. Also I'm not sure if you're standing behind this material, the other person can't see you, but can you see the other person? Like जो बंदा मटेरियल के पीछे खड़ा है वो बाहर देख सकता है? I'm not sure. उसके भी कुछ ऐसे ब्लाइंड जोन्स होंगे. Oh my issues, if refraction is involved 100%, it can't be as completely invisible through every angle. वो अब लाइक अगर कोई बंदा खड़ा है एंड वो ऑब्जेक्ट को नहीं देख सकता, देयर इज अ चांस कि ऑब्जेक्ट बंदे को देख सकता है, उस लाइक पर्टिकुलर बंदे को, बट कुछ और मे भी नहीं देख पाए कोई और सेक्शन. बिकॉज रिफ्रैक्टिव ऐसा वो नहीं होता ना, रिवर्सिबल नहीं होता ना एग्जैक्टली. बिकॉज वो सब ऐसा टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन वगैरह आता है. यस, रिफ्लेक्शन होता तो मैं बोल देता कि अगर उसको नहीं देख रहा तो उसको भी नहीं दिखेगा. इस वजह से मैं ऐसा ऑटो में जब भी मैं पीछे बैठा होता तो मैं ऐसा जगह बैठता जहाँ पे मेरे को वो नहीं दिखता, तो आई कैन मेक श्योर लाइक वो भी मेरे को नहीं देख रहा है. रियल लाइफ फिजिक्स यूज. तो रिफ्लेक्शन में देयर इज अ चांस कि लाइक उसको भी नहीं दिख रहा कुछ भी. तो यस. Yeah, I think it's clear कि invisibility as abhi, if we talk about the possibility of it being real, it's not really we are not at that point ki we can make it work. There are some ways around it but it's not physically possible completely. But again, let's just cross this barrier some point in the future. If invisibility was possible, would it be a good power to have? Nope. नहीं, never. ठीक है. The biggest first issue which I see, जो actually movie में भी दिखाया था in the Invisible Man, you can't sleep because your eyelids are transparent now. Yes. I'm not even talking about if you can see or not, because like retina भी transparent है. ठीक है. तो I don't know like transparent retina. So
we are just assuming We कि s- हाँ तू मतलब तुम invisible हो just like the invisible man, like Hmm. nothing is visible on you but you can see stuff. Yeah, actually you हाँ, can't so stop seeing stuff. yeah. So so usually we see by when the light ऐसा excites the cones and rods, है ना? Hmm. Cells basically. तो अब I don't know like transparent cones or rods भी ऐसे excite होंगे कि नहीं होंगे? Again, Maybe. I don't want to अभी get in ज़्यादा physics में because if we go into it हाँ. वो पूरा बात उसी पे चल जाएगा. But yes, Yep. if invisibility was actually possible, I also think पहली बात तो it won't be a power. Let's just be very very real here. Nope. बहुत creepy लोग हैं दुनिया में. We all know what you're going to do. Come on, listeners. We know. हाँ. Don't act like you're Yep. बहुत भयानक अच्छा आदमी हो. नहीं तुम नहीं हो. Yes. You're a creep. The first thing is like सीधा no नहीं. सबके दिमाग में एक ही चीज आता है. I know. गंदे लोग. Also, if you, I'm just saying, if you're going invisible, that just means ठीक है तू, okay, I can't see you normally, but thermal cameras, motion cameras still exist, buddy. It's not that good of a power. तुम ज्यादा कुछ नहीं कर सकते हो. Yes. And technically you are not also invisible as a pura. Cause like when you are moving, ठीक है, you collect ऐसा dust particles जो ऐसे Exactly. normally skin पे नहीं दिखता है, but जब नहाते हो तो दिखता है. You can see like काफी. So when you are transparent वो clearly दिखेगा. ठीक है, so ऐसा It would 5 मिनट में you it's can kind of like will outline. be visible now. हाँ, outline मस्त ऐसा. Outline भी नहीं actually, हाँ पूरा अच्छे से एक layer बन जाए तुम्हारे ऊपर. Yep. You can see everything. You can make out कौन person, like who is the guy. This is the guy. पक्का से. बारिश में, स्नो में, कहीं you can't go out. हाँ. Yes. And also you can't wear anything. Okay. So That was I think obvious when we mentioned Invisible Man. बंदा वही करता था हर बार. Would be weird if you were invisible and it was a condition. It is a condition. You can't wear anything. Very uncomfortable feeling walking around public like that. Yes. And also when you can't sleep, you'll be visible. And Okay. what else? You can't see yourself. So I think that also थोड़ा बहुत hinders your ability to move. Like we don't appreciate how important it is that when we are moving, we are able to see ourselves. Because again, I know proprioception is a thing. We have a sense. आंख बंद करके हम लोग को पता होता है हमारे हाथ पैर कहाँ जा रहे हैं. But still, without it, I think थोड़ा दिक्कत तो होगा to get used to. थोड़ा दिक्कत नहीं, I would say बहुत issue होगा. Just to like have a normal life. Yeah, normal life so nahi ho raha at this point, but हाँ. Just to live. Okay. But हाँ, like that seeing yourself is important because most of the times you don't. So there's this sort of experiment now, like you cross your arms and after a point, like your you'll feel your left arm is your right arm and your right arm is your left arm. ठीक है, even though दिख रहा होता है, but you feel like अगर बोलूँ कि like yes. Basically, you have to cross your arms your and left index. जहाँ पे basically cross हुआ है, you don't have to focus on that part. Yes. बीच में like kind of like a barrier put कर दिया जाए, and if your hands are stimulated, so at some point you won't know कि left hand कौन सा right hand कौन सा है. बेसिक टास्क में इशू होने लग जाएगा. फेस आईडी नहीं काम करेगा यार उसका. I think वो बंदा फोन नहीं यूज करेगा bro if he's invisible. That is the biggest concern. वो फोन नहीं यूज कर रहा. How will he survive? Just by being a creep.
इनविजिबल हो गए कोई भी आदमी अच्छा काम किया आज तक? ये बताओ मेरे को, लिटरेचर में, But मूवी में, कहीं पे भी. after a point he'll be bored. मतलब Definitely. क्या ही करेगा? It's a curse, it's not a power. तो एक्चुअली बुक में, द इनविजिबल मैन बुक में, जब वो मरता है फाइनली, ठीक है, सो मूवी में तो वो अलग ही सीन है. मूवी में वो एलिवेटर सीन है, वो आग लगा देती है उसके मूवी अंदर. बुक That is- में आई नो उसको लाइक ब्लड वो इज जब ऐसे उसका कॉर्प्स का राउंड ब्लडी हो जाता है एंड स्लोली उसका बॉडी हाँ, रिवील होता है, राइट? वो ऑर्गन्स आते हैं, फिर धीरे धीरे बोन्स आता है एंड स्किन आता है, स्नो में होता है. बहुत हॉरिबल सीन है वो बुक में डिस्क्राइब. हाँ, स्टोरी रिवील ऐसा नहीं देखा मेरे को. एंड ऑल्सो तो अब लाइक यू आर इनविजिबल बट you're just invisible. ठीक है, you make noises, you make sounds. या ठीक है, you अच्छा हाँ, you also have हाँ, as a just weight. for the sake of everyone listening and knowing, when we are listing any superpower, उसके साथ और कुछ फ्री में नहीं आ रहा है. It's just that power. हाँ, वही ऐसा उसके साथ और कुछ नहीं. अगर ये हो रहा तो कॉम्बो वो तो पैकेज होगा ही नहीं है. नहीं, ऐसा कुछ नहीं. वन फॉर ऑल नहीं है ये फॉर द आने में लिसनर्स. ठीक है, तो ठीक है, you'll make sounds, you have weight, so you can ऐसे you'll make your presence feel. ठीक है, and interesting, you are not ऐसा indestructible. ठीक है, और immortal. ठीक है, if if नहीं, if तो नहीं, when you will like when you have some sort of illness or when you get in some accident, because since you're invisible गाड़ियों को नहीं दिखेगा, हाँ, you are crossing the वो road. बहुत लोग भूल ठीक जाते है. हैं कि यू आर इनविजिबल, ठीक है, बट यू आर इनविजिबल. ठुकोगे तुम. ठीक है, दिल्ली में तो ऐसा मस्त ठुकने के बाद शोर मचा, तो लाइक दिख नहीं रहा, लिटरली नहीं दिख रहा नहीं उसको. दिख रहा है ब्रो. ठीक है, so how will the doctor ऐसा operate on you या फिर diagnose you? I don't know. You are very, very, very vulnerable. Yes. Also, I think at some point, इसके अलावा भी you will have that ऐसा very, because बहुत isolated जिंदगी रहेगा तुम्हारा. अलग जैसा No one will be. isolation में रहना है तो वो it will get very lonely for you. At some point of time, I'm pretty sure you will have a sense of a loss of identity type issue होगा. हाँ. And it's It's going like to die a slow, painful death or a very fast one. There is no in between. yes. Probably fast, painful, sure, and like किसी को पता भी नहीं चलेगा. So Yes. like normal people feel as alone in crowds. Okay, like there's no one is seeing you. ठीक है, ये तो literally invisible है. No one is seeing you, man. I forgot, did Invisible Man mention कि उसके like were his organs also ऐसा visible? Like अगर let's say वो बंदा को पानी पी रहा है या खाना खा रहा है, do we see that food going down या फिर वो just गायब हो जाता है मुंह के बाहर? We don't see the insides. That's a I gross don't thing. remember book में कैसे डील होता है. I don't remember exactly कि अगर बताया है नहीं खाने वाला चीज. My brain goes to food. देख रहे हो? Priorities. दसा. नहीं. You sided with the enemies just to go against डोसा. ठीक है, मेरा प्रायोरिटी ऑर्डर में डोसा थोड़ा नीचे आता है, वो ऊपर आता है. I'm not saying कौन ऊपर आता है. Shush. Record हो रहा है. Shush. We don't want anything leaking. Yeah, so invisibility is stupid. And this is why you don't want invisibility. बिल्कुल नहीं. Let's go on to the next superpower that is actually a superpower
but it has its again pros and cons. Super speed. Oh, ये हम सबने देखा है what Flash can do, what Quicksilver can do, but yes. what Accelerate can do. Can't forget Accelerate, my buddy. Oh, Accelerate. Yes, Yes. yes. Now when we Who's are your talking favorite about speedster? what? Oh, sorry. Continue. नहीं बोलो. I want to listen to that question. Who's your favorite speedster? Like movies, shows, cartoon, anime. Okay. Anime, cartoon. Depiction wise, I would say the way X-Men में दिखाया गया था Quicksilver को, I think that shows the best depiction of super speed. Okay. But I think Flash deals with some of the physics of it. That is good. Not all of it. ठीक है, नहीं कर सकते सब कुछ, but they try to give reasons to some of the things that comes with super speed. Flash did with a speed force what Ant-Man did with quantum. Yeah, they tried. कुछ भी है speed force. they tried, which ठीक है, I appreciate because बहुत लोग नहीं करते हैं. Marvel. Okay. Yeah, so I think I would say Flash is, for me, it's Flash. Nice. Flash was good till season 3. I think मैं 2 तक देखा था, पर उसके बाद फिर बहुत बोला कि आगे कंटिन्यू मत करो. So I was like, okay, क्यों? It's not that good. ठीक है. Yes, fine. It's not that good. नहीं, इसको नहीं देखना चाहिए. Yeah, so also I was saying कि when we talk about super speed does not mean it's 100 km/h speed. नहीं. Super speed means ऐसा going 0.1 c type speed. So, or like Mark 3, Mark 4 also works. Yeah, Mark 3, Mark 4 speed, like inhumane speeds. 100 km/h is also inhumane, but still. इसलिए मेरे को दिख रहा है वो एटलीस्ट. इसमें बस मेरे को ब्लर देखना है. ब्लर होगा. So yes, let's go over if this is possible again, and then we'll go into what cons and cons are with this. Sorry, pros and cons are with this. Cons and cons are cons and cons only. I know. There are just cons. Yes, I know. We'll get to that part later. But is super speed possible? Okay, I'm at this point ऐसा ignoring all the problems. ठीक है. जो फ्लैश में थोड़ा बहुत डील करने का कोशिश भी करता था, लाइक फ्रिक्शन वगैरह का, लाइक डस्ट फ्रिक्शन जो होता है. Yes. वो सब मैं एट दिस पॉइंट इग्नोर कर रहा है कि लाइक होता है ना टिपिकल आइडियल वर्ल्ड, नो फ्रिक्शन, नो एयर रेजिस्टेंस, कुछ नहीं. ठीक है, मस्त एनएलएम लगा के सॉल्व कर सकता हूँ मैं. Yeah. तो अगेन बहुत सारा फिजिक्स आने वाला है अभी. So for someone to go at as a Mark 3, Mark 4, they have to accelerate super fast. Wait, the issue with that, I think what most people miss is super speed is not the problem here. The way it's depicted, like super acceleration and stuff, is banda still khada hai and अचानक से he goes as a Mark 1. That is not possible. You can't do that. Like, you understand? Mark 1 की स्पीड पे है ना, let's just say 0.5 सेकंड, कितना फोर्स लगेगा तुम्हारे पैर पे? And you can actually calculate. Yeah, you can type in the as a variable. ChatGPT को करने भेज दो, कर देगा वो, करके भेज देगा. But ठीक है यार, assuming 330 है तो 660 हो जाएगा. 0.5 में अगर कर दो तो 0.5 सेकंड्स में. Yeah, it's insane. Your body can't handle that kind of force. You will die. 660 is ऐसा 66 Gs. Jesus. 66 Gs. तो ऐसा एस्ट्रोनॉट पे शायद ऐसा क्या 8 Gs 9 Gs कितना था? 10 मान के कितना था? I would say 10-12 मान. उससे ज़्यादा तो हो ही नहीं सकता है. 60-70 तक तो खत्म हो जाएगा इंसान. And this is just Mark 1.
I should not just say just Mark 1, but okay, ठीक है, Mark 1 comic. If we are going by this a comic book level, जहाँ पे दिखाया गया है Flash can go up to like 0.1 c of 0.1 c speeds, वो कैसे होगा? What you are going to go ऐसा 30 मिलियन जी कहाँ जाओगे तुम? Yes. That वही is not possible. super speed में वही like to actually ऐसा technically go for super speed is like you have to just ऐसा accelerate काफी जल्दी. So like body का metabolism को ऐसे तुमको बहुत तेज करना है बस, और कुछ नहीं. But उसके साथ जो issues आ रहे हैं वो बहुत ज्यादा है. Like invisibility में it was a physical limitation कि like Yeah. actually physics को तोड़ना पड़ रहा है. ठीक है. Yes. To do stuff. इधर physics is okay कि तेरे को करना है कर. Physics says it's Biology possible. issue Biology says it's better नहीं. हाँ, biological problem है. ठीक है. वही तो इससे अगर तुम कर भी रहे हो तो जी फोर्स तुमको ऐसा ग्वेन स्टेसी बना देगा. So Oh no. वो issue है. ठीक है. फिर उसके बाद इतना हाई मेटाबॉलिज्म. सो लाइक फ्लैश में दे शोड के टू कीप बैरी रनिंग दे हैव टू फीड हिम इतना सारा बर्गर्स इस दिन का. बर्गर खाने से नहीं भाग रहा होता तेज, ठीक है. हाँ, फिक्शन चलता है. If anything थोड़ा कम भागेगा, मर जाएगा. हाँ. इतना बर्गर खाएगा. एंड वी आर नॉट ऐसा बैटरीज की लाइक ऐसा मैं अगर एक बार में 500 बर्गर खा लूंगा मेरे में बहुत ज्यादा 500 बर्गर का एनर्जी रहेगा नहीं, वो चला जाता है. ठीक है. वो इतना एब्जॉर्ब नहीं होगा, वो धीरे धीरे एब्जॉर्ब होगा. सो मतलब हाँ ठीक है, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा उसका, मे बी हो सकता है. Again, wait. एंड हाँ, बहुत ज्यादा. Can't. Again, humanly not possible. बिल्कुल भी नहीं. So फिर द प्रॉब्लम ऑफ फ्रिक्शन. ठीक है. yeah, heat, friction and heat come hand in hand. तो you have super speed but you are not indestructible again. ठीक है. स्किन छिल जाएगा पूरा, सब जल जाएगा लिटरली. Yeah, I have heard the argument कि if you have like a good suit, if we can make perfect suit, नहीं. Have you ever seen as a asteroid? Not you, sir, not you. Just listeners. Have you ever seen as a asteroid crash? अर्थ के एटमॉस्फेयर में आते ही इट बर्न्स. जादू नहीं होता है वो. इफ यू आर गोइंग दैट फास्ट आग लगेगा. आई मीन आग, यू विल हीट अप द एयर अराउंड यू एंड इवेंचुअली यू. सो उस सूट को भी कैसे बना लोगे? लाइक यू कांट ऐसे रिड्यूस फ्रिक्शन टू जीरो. बिल्कुल नहीं, पॉसिबल ही नहीं है. ठीक है. इवन इफ यू यूज ऐसा कोई लिक्विड सरफेस टाइप का, उस पे भी फ्रिक्शन होता है. सरफेस लाइक लिक्विड सरफेस पे फ्रिक्शन होता है. ठीक है. तो वो जलेगा. चलेगा नहीं तो एटलीस्ट वेयर ऑफ तो हो ही जाएगा. लेट्स से कुछ ऐसा फ्लेम प्रूफ मटेरियल है. ठीक है. कुछ बनाया ऐसा, आई हैव नो आइडिया कैसे बना दिया बट बनाया है. ठीक है. तो फ्लेम प्रूफ है बट वेयर ऑफ तो हो जाएगा. फिर I think it can survive as a Mark 1, Mark 2 तक, ठीक है. I can see that happening. When we come close to the speed of light and वो सब वाला हरकत नहीं, बिल्कुल नहीं. उधर मत जाओ. वो तो अलग इशू. यस. ओके. वहाँ जाने का फायदा नहीं. Again, if you are assuming अब कि like okay you have ऐसा कोई सूट कि तू बच रहा है and you can ऐसा eat a lot of burger. ठीक है. And so you have so super soldier body कि like 60 Gs 70 Gs भी झेल रहा है. Okay, you are Flash in the body of Chris Evans या Hemsworth, दोनों में से कोई किसी एक को उठा लो. Preferably Hemsworth. Okay. बस भाई वो ऐसे स्टार के सामने खड़ा हो गया था वो पागल आदमी. तो इससे ये भी हो रहा है. But things around you are not indestructible. People around you are not. Spider-Man देखो कोई. The boys. The boys. Yes, boys देख लो. ठीक है. Mark 3 पे you create ऐसा shock waves.
जब भी स्टार्ट रनिंग या फिर रुकेगा, ठीक है, आसपास सब खत्म हो जाएगा, यू आर लाइक हल्क। ए ट्रेन नाम था ना उसका। यस, ए ट्रेन। यस, ई ट्रेन। बंदे का इंट्रोडक्शन होता है, ही स्टार्ट्स ऑफ बाय किलिंग his girlfriend, who just runs through her. रुक नहीं पाए। So problem is the only good thing of super speed is पानी पे दौड़ सकते हो, ठीक है। अगेन ऐसा भले ऐसा बहुत Man and फ्रैक्शनल their टाइम के लिए दौड़ fascination पाओ। with walking on water again. मैं इनक्रेडिबल्स देखा है, ओहो डैश की खुशी देखी थी, मैं द बेंटन मोमेंट ही देखा है, रियलाइज कि वो पानी में। एक्सेलरेट जो भागा था पानी पर, ओहो। हाँ वही, जब लाइक पहली बार में हिट नहीं होता कि लाइक यू कैन रन ऑन वाटर, बट जब देखते हो नीचे, डैम कर सकते हैं ठीक है। इवन तो भले ऐसा 3 सेकंड के लिए होगा बिफोर यू बर्न अप एंड डाई, बट यू कैन रन ऑन वाटर। अच्छा, इन सब के बाद भी देयर इज वन मोर प्रॉब्लम आई थिंक, जो कि बहुत बड़ा इशू होता है विद सुपर स्पीड। पीपल थिंक कि सुपर स्पीड के साथ व्हेन यू आर रनिंग फास्ट, यू ऑटोमेटिकली दुनिया तुम्हारे अराउंड स्लो हो जाता है, which is not the case. You don't have super perception, you have super speed. हाँ, yes, Again, basically कॉमिक बुक में इट कुड बी पॉसिबल कि ठीक है, यू कैन जस्टिफाइड बाय सेइंग कि बंदे के पास दोनों है, बट हियर वी आर जस्ट टॉकिंग अबाउट सुपर स्पीड। यू डोंट हैव सुपर परसेप्शन, तो जब तुम इतना तेज भाग रहे होगे तुमको कुछ दिखाई भी नहीं देगा। लाइक फ्लैश के पास है, लाइक फ्लैश हैड दैट सुपर परसेप्शन थिंग, हाँ, तो वो देख सकता था, ही कैन ऐसा प्रोसेस एवरीथिंग। यस, ठीक है, उसी की वजह से आई मीन like DC में the most broken character is Flash, yep, because if he can think at the speed of whatever, ठीक है, he can do anything, but वो करता नहीं है, you have to बस perceive funny character है। information at the speed पे, oh god। उसको ट्रेडर बनाओ, मजा आ जाएगा, पैसा छापेगा वो, मजाक नहीं कर रहा हूँ। अगर फ्लैश ट्रेडर बन गया, ओहो जी he wants revenge, he doesn't want money। रिवेंज, उसका कैरेक्टर कितना घटिया है, उसकी गलती है, ठीक है। एंड so बस वो once अटक you जाता है। say introduce time travel, तो फिर oh, and time travel related to speed specifically, ये स्पीड हाँ, वाला इशू होता है। एवेंजर्स का जो टाइम ट्रैवल था, दैट इज डिफरेंट, कंप्लीटली डिफरेंट टाइमलाइंस, एंड कोई बात नहीं, वो दैट तो इज, डिमेंशनल ट्रैवल कहूंगा, हाँ उसको दैट टाइम इज, ट्रैवल भी नहीं कहूंगा। हाँ दैट इज डायमेंशन ट्रैवल। If you're involving Yes. speed in time travel, that completely breaks every single logic। Yes. And I don't understand कि like तुम सुपर स्पीड से टाइम ट्रैवल कैसे पीछे कैसे जा रहे हो? I don't understand. फिक्शन super नॉवेल्स में वही होता है, बिकॉज स्पेस टाइम कंटिन्यूम इज अ थिंग, सो इफ यू कैन बेंड स्पेस यू कैन बेंड टाइम। नहीं ब्रो, नहीं, इट्स नॉट दैट इजी कि तुम कुछ भी बोल कुछ भी कर दोगे। if you run at speed of light, ठीक है, बिग इफ, then ओके। हाँ, तो I mean approximately एक हफ्ते में you'll gain a year. Like you travel for 1 week, you run for 1 week, you gain a year. एग्जैक्ट मैथ्स को सॉल्व कर लेना यार, बट ठीक है, आई एम समथिंग लाइक अज्यूमिंग कि दैट, अभी ओके। है। हाँ ठीक है, तो इन दैट वे यू कैन ट्रैवल टू फ्यूचर। उसको भी मैं एग्जैक्टली टाइम ट्रैवल नहीं कहूंगा, कि तुम फ्यूचर में जा नहीं रहे हो, फ्यूचर तुम्हारे पास आ रहा है इफेक्टिवली, ठीक है। यू कांट गो बैक अभी अपने टाइम में, तुम तुम्हारा टाइम ऐसे एक्चुअली टाइम निकल गया है, ठीक है, टाइम ट्रैवल नहीं किया तुमने, ऐसे जंप नहीं किया है, यू टाइम जस्ट ऐसे वेंट थ्रू डायलेशन इज काफी द जल्दी। बेटर टर्म देयर, विच इज हाँ द रियल थिंग, ठीक एग्जैक्ट, है। हाँ वो होता है। एग्जैक्टली टाइम डायलेट ही हुआ है, हाँ, ठीक है। दैट इज नॉट यू बट ट्रैवल थ्रू टाइम। बेटर एग्जांपल इज तुम लाइक यूट्यूब वीडियो देख रहा है, ठीक है, सो टाइम ट्रैवल इज ऐसा स्किपिंग कि लाइक तूने कहीं आगे जाके कर्सर रख दिया, लाइक 20 मिनट टाइम स्टैम्प पे, 30 मिनट टाइम स्टैम्प पे, ठीक है, बट इंस्टेड ऑफ दैट यू आर जस्ट ऐसा व्यूइंग द वीडियो एट ऐसा 2x 3x स्पीड, ठीक है, तो तू सब कुछ करा तू, बट ऐसा
एट अ ग्रेटर स्पीड। Yeah. तो इसलिए उसको टाइम ट्रैवल भी नहीं कहूंगा। पीछे कैसे जा रहा है आई डोंट नो, वो तो छोड़ दो, दैट डजंट मेक सेंस। ठीक है, It's a different thing. If you want to know what actual, what's the super speed close to fast speeds is, look up tiger beetle. They are as a small insects जो कि I think travel अपना 17 to 18 times their body length in some microsecond नहीं, हाँ microsecond you can say microseconds. So they are very fast that way. But the problem with that is इतना तेज मूव करने का they are functionally blind. So they also they move fast, yes, but they can't continuously move fast. They have to like stop stop just to locate कि उनका prey या जो भी है कहाँ पे है, because the moment they're traveling they can't see. So that is a close example in real life कि what will happen if you have not super speed but high speed. दुनिया blur हो जाएगा. So basically this thing has a unlimited jet dash. Yes. Yes. Okay. Exactly. हाँ. वीडियो देख रहा था, ऑस्ट्रेलिया में सुप भाग रहा था. नहीं, सब ऑस्ट्रेलिया में ही होता है और कहीं नहीं होगा. Don't have to imagine any other place doing this. कहीं और हो ही नहीं सकता, लाइक रहने ही नहीं देंगे उसको. ऑस्ट्रेलिया में मस्त सैंडबॉक्स एनवायरनमेंट है, जो करना करो, नो वन इज स्टॉपिंग यू. ऐसा आउटलाइन जहाँ इंसान रहता है, बाकी तो पूरा कंटेंट फ्री है ना. बाकी जिसको जो करना है करो. रैंडम एवोल्यूशनरी पीएनसी खेल रहा है बैठ के, खेलो. ये है मछली, इसको पंख दे देते हैं, ये मछली उड़ेगा. अरे क्यों देना है मछली को पंख यार तुमको. मल्टीमीडिया गैलरी. सो दिस वन, नोआ का स्टोरी पता है ना, नोआज आर्क. हाँ हाँ. उसमें when the flood was just about to happen, तो Noah ordered every species on earth, ठीक है, like a pair of every species to board the ark, है ना, ऐसा couple. so ऐसा कितना फनी होगा कि like नोआ ने ऐसा एक यूनिवर्सल मैसेज भेजा है, ठीक है, सारी स्पीशीज को ऐसा थ्रू टेलीकिनेसिस जो भी, देख कि टेलीपैथी, लाइक आ जाओ, ठीक है. एंड ऑस्ट्रेलिया से कैसा बड़ा सा ग्रुप आ रहा है एंड नो लाइक इतना तो मैं एक्सपेक्ट नहीं करता, जगह नहीं है. ऑस्ट्रेलिया के लिए अलग से वोट बनाओ यार. पार्टी वेयर वर यू. इतने तुम लोग कब हो गए. ऑस्ट्रेलिया में आई थिंक एक्चुअली लाइक ऐसा स्पीशीज ज्यादा होगा देन एक्चुअल टोटल ऑर्गेनिज्म काउंट. मेरे को अभी तक पता है था कि ठीक है, एक कैंगरू होता है and there's a different animal that looks like kangaroo but is not kangaroo. मेरे को नाम नहीं पता उसका. I'll have to look it up क्या होता है. Let me see if I can find that. Kangaroos, wallabies, padmelons, ये सब अलग अलग एनिमल हैं. There are 45 species of kangaroo and wallaby. तो 45. क्यों इतना, एक लाइक क्यों चाहिए इतना वैरायटी? लाइक तुम लोग के पास अकेला ही कैंगरू है, किसी और के पास नहीं है कि लाइक तुमको ऐसा अलग रखना है, लाइक उसके पास वो वाला कैंगरू, मेरे को दूसरा चाहिए. नहीं, wallaby, wallaroo, tree kangaroo, quokka, muskrat kangaroo, padmelon, बहुत कुछ है. कोका बहुत क्यूट होता है. कोका हमेशा ऐसा हंसता हुआ दिखता है. हंसता हुआ दिखता है. कोका बहुत क्यूट होता है. एक अच्छा चीज ऑस्ट्रेलिया में. very वंडर पॉपुलेशन डिक्रीजिंग. पोतरो कोका का पोतरो क्या होता है? तोतरो होता है. तोतरो is different. वो नहीं होता ऑस्ट्रेलिया में. होता भी होगा तो how would we know? क्या पता हो. We would never know. एक्सोलॉटल्स भी ऐसा ऑस्ट्रेलियन है ना? एक्सोलॉटल आई थिंक मिल जाएगा बाहर कहीं और भी. बट एक्सोलॉटल भी ऐसा मस्त हैप्पी दिखता है, ऐसा स्माइल करता है, क्यूट होता है एक्सोलॉटल. बट
Coca. Yes, Yeah. Australia is a free land, Invincibles. Super speed. and that was super speed. Yep. Do we have time for another one? या फिर I think we can go just another one. Yes. Okay. Yes. Mind reading. I would say mind reading is one of the things, telepathy as people call it, is one of the things in this list which I can say ठीक है, ये is actually मैं मानता possible है, because it's not that Possible. out of the world to think about. हाँ, मतलब इसमें it's like telepathy या फिर mind reading is just as a form of communication जो अपने को अभी तक दिखा नहीं है, ठीक है. It's like अपने को काफी टाइम लगा था to understand कि like some ऐसा insects communicate through scent, ठीक है, cause we can't ऐसा process कि like pheromones. बोलने की जगह भी लोग समझ सकते हैं, ठीक Yeah. है. तो उसी टाइप से if you find some sort of communication, ठीक है, which is not so verbal या visual, ठीक, लोग confuse हो जाएंगे. So there's a thing that you can already ऐसा because the brain actually generates ऐसा electromagnetic field, ठीक है, that's how it works. तुम्हारा nervous system पूरा electricity पे ही काम कर रहा है. So I think it's not ऐसा very far-fetched idea to actually like process it in some way, so that, but ठीक है, brain waves को तुम study कर सकते हो. It's a thing that actually people do. Yes. So yes, actually it's not impossible कि आगे जाके there could be a thing in such a way कि okay, and okay, we are going back to Marvel. Just the way Ant-Man and the Wasp में दिखाया गया था, there was quantum entanglement. Ant-Man and the Wasp Quantumania? नहीं, Ant-Man and the Wasp, the second one. Okay. What was that for? Ant-Man and the Wasp. हाँ, ठीक है. पापा यागा वाला. Okay. So yeah, Janet quantum entangled with इसका नाम क्यों भूल गया था? Not hope. Not hope. Paul Rudd का character का नाम क्या था? Why am I forgetting his name all of a sudden? उसका नाम क्या है? Ant-Man का असली नाम क्या है? Ant-Man का असली नाम Paul Rudd है. अरे मतलब character का नाम क्या है? अच्छा, अरे क्या MCU में. MCU में नाम क्या है उसका? Why am I forgetting this? This should not happen. Oh no. Wait, hold on. We have to do this. कहाँ पहुँच गए? मार्वल, शर्म करो, तुम्हारा कैरेक्टर नाम बोल रहे हैं हम लोग. Scott Lang. Scotty. Yes, तो Janet entangled ऐसा quantum realm में थी Janet, and ये बंदा बाहर था. Yes. And she quantum entangled with him, and इसके through she ऐसा उसमें बहुत कुछ दिखा देता कि she ऐसे ही उसके literally उसके soul में घुस के बातचीत कर रही थी, but जो भी हो. But there could be a similar thing like quantum entanglement जिसमें one person can actually like somehow access the other person's field, electromagnetic fields. So I don't know how, but it might be possible. Or I have a simpler idea. Go ऐसा on. fit RxTX in brain, like as a receiver transmitter. You just need a chip जो basically brain waves को ऐसे decode करके create packets और उसको तुमको ऐसा phone के signal की तरह basically एक जियो का सिम लगाना है दिमाग में, and you can transmit to other number. phone number याद होना चाहिए उस केस में बस, जो कि highly improbable है, but हाँ. That is the lame version of mind reading. That is mind reading, but at home. Yes. हाँ, that is okay. ऐसा Elon Musk से बात करो. In that way, yes, it is possible. तुम if you sit in a medical lab अपने सर में 5-6 equipment लगा लो, of course they can. अच्छा नहीं, एक छोटा सा बॉक्स लगेगा बस, ठीक है, उसके अंदर सब आ जाएगा. लाइक ऐसे ऐसा माइक्रो इलेक्ट्रॉनिक्स काफी अच्छा है, काफी छोटा हो गया सर, 3-4 नैनोमीटर तक पहुंच गए हम लोग. तो साइज का इशू नहीं है, तो वो प्रॉब्लम नहीं है. बट वो ये कि इट्स लाइक फोन को बेसिकली हटा के यूर सॉर्ट ऑफ
making your brain a phone. हाँ, so problem with telepathy is not कि ये कैसे होगा, problem comes after this is possible कि अब बहुत Oh issue है because yes. how do you control it, what are its ऐसा limitations, because if mind reading is given to you फिर तुम there is no privacy. Privacy is a very fancy word I'm saying, but you understand what I'm trying to say, sir. Society collapses. Ha ha ha. Exactly. Society can't Basically, function if you're totally, if everyone is transparent with everyone. You don't have any hidden information anywhere. नहीं, like this is ऐसा बहुत ज़्यादा utopic. Like सबको सब कुछ पता है, one world, one nation, सब साथ में. Yeah. काम नहीं करेगा वो बात अलग. नहीं करेगा. Definitely. You can't lie. पता है कितने divorce होंगे? People don't realize lying is a very important aspect of survival. Actually, having lying इसको क्या बोलेंगे? It's just having different information. Let's say a different set of information. It's not lying, just you have a different set of information than the other person. And that is important. It's think of it like economy. तुमको इसमें कम्युनिज्म नहीं चाहिए. And I think you are talking about lie of omission इस case में, but I think it can be a similar thing, but I don't think anyone would want that. हाँ नहीं वो तो नहीं. Lying, sir. So for all who have studied in ICSE board, their school, they would have read this. It's a short essays का एक book मिलता था हम लोगों को, ठीक है? And there's an essay called On the Art of Lying, and that's a 4-5 page essay, ठीक है? जो basically essays कहते हैं उसको. The book is called a short collection of essays, but वो actually stories हैं, ठीक है? That's 4-5 page story about what all different lies are there and how lies are important for the society. स्कूल के बच्चों को झूठ बोलना सिखा रहे थे and how that is important. It is important. Yes. मस्त रियलाइजेशन था ना वो. So basically उस बुक में 2 essays थे, एक on the art of lying and on the art of living with others. ओहो. Second one was like heavy topics for children. Yes. Basically 11th 12th वाले बच्चों को दिखाते थे, like बच्चे तो नहीं कहूंगा मैं उनको. बच्चे हाँ फिर सिखा. never mind. बच्चे नहीं फिर. हाँ. But on the art of living with others मस्त था, cause like उसमें actually बताते थे. like एक सेक्शन था कि like criticism कैसे देना है सामने वाले को, ठीक है? कि like उसको अगर काम करके आया है उसको criticism नहीं चाहिए ज़्यादा, ठीक है? तो friendly criticism कैसे दे, ठीक है? Which most people struggle with, I think. Yes. So yes, mind reading में problem है. बस mind. Other if thing, it's regulated, जैसे तुम्हारे phones होते हैं कि like if you can choose कि like मेरे को क्या बोलना है सामने वाले पे, ठीक है? मैं कॉल करूंगा उसको and then I can talk, ठीक है? Then it's fine, cause वो अभी भी चल रहा है. Problems और हो जाएंगे उसकी वजह से, but ठीक है, वो इशू नहीं है. बट अगर ऐसा completely transparent है कि like बस जो भी चल रहा है वो सामने वाले को सुनाई दे रहा है, तो बहुत प्रॉब्लम हो जाएगी. Yeah, I was going to that point कि when we are talking about mind reading, what exactly do we mean by it? कि बस तुम्हारे पास ही power है and you're ऐसा listening to everyone's thoughts, या फिर you can just control it, या फिर everyone has this mind reading possible, and again फिर वही issue हो जाएगा. Everyone can read each other's mind. So usually पहला case is सबसे ज़्यादा दिखाया जाता है pop cultures में telepathy का. If we are talking about telepathy, कि प्रोफेसर एक्स है and he can scan someone else's mind and controlled way में वो जब चाहे किसी का mind पढ़ सकता है. That again, that sounds cool, that is cool, but you don't have that selectivity power with you when we are talking about mind reading. That's the crux here. Yes. Also, if I'm assuming कि like
you only have this power and you can select, you can mute something out. ठीक है. Also उस केस में भी I won't choose for it. Cause ignorance is actually a bliss. हाँ सर, ठीक है. इट इज वेरी ऑब्वियस कि हम लोग जो भी बात कर रहे हैं, वी आर नॉट गोइंग फॉर द सुपर पावर्स. वी अंडरस्टैंड ईच अदर, हम लोग को पता है कि ये सब नहीं चाहिए. Again, agar if you have the option of knowing everything about the other person, ठीक है, listening to their thoughts, वो अच्छा नहीं है. ठीक है, because there are some things which you should not know about yourself. ठीक है, just to survive. अगर सबके ओपिनियंस सुनने लग गए, ओहो, मस्त suicide rate जो ऐसा शूट अप करेगा ना. Your brain will be as a constant, say your Twitter feed notification बजता रहेगा टन टन. Oh yes. एंड अगर सब की बातें सुन रहे हो तुम, यू कांट कंट्रोल इट, फिर तो ओहो. हाँ, उस केस में तो यू आर बेसिकली गॉड एट दैट पॉइंट. यू आर गॉड. तुम सबके प्रेयर्स सुन रहे हो बस. दैट्स व्हाट्स हैपनिंग टू यू. ओ, कौन सा मूवी था? ऑलमाइटी. Bruce Almighty and God the Secret. Yes. Yeah, that is what going to happen. So, have you seen that show, Irregulars? But I have heard about it. Haven't seen it. I have heard about it. हाँ. So उसमें there are 3 kids. ठीक है. Irregular सही है ना? यही. No, Irregular is दूसरा. ये तो कुछ ऐसा वो है. Irregular is a mystery, like detective and वो सब चीजें. हाँ, Sherlock Holmes का कुछ spin-off टाइम. Yeah. अरे यार, there is some imperfects. Yes, it's called the imperfects. Have you seen the imperfects? Don't think I've even heard about it. So उसमें there's this girl which has super hearing. ठीक है. Super hearing. Yes, super hearing. उसको सब सुनाई देता है. Everything. It's like so. Loudness या फिर frequency की बात कर रहे हैं हम लोग, या फिर सब कुछ. Basically, audible zone उसका बड़ा है. Oh. Hearing zone, audible zone नहीं, hearing zone. I understood what you meant, but yeah. So like हॉस्टल में मेरे को ऐसा विवेक और रोहन के अलार्म्स की आवाज आती थी ना. इसको बेसिकली पूरे कैंपस के अलार्म्स की आवाज आएगी इस टाइप का से. Ouch. That is not a power, that's a curse right there. दूसरा जो था द अदर गाय जो ऐसे चुपाकाब्रा में ट्रांसफॉर्म हो जाता था. ठीक है, वो इट्स लाइक विलफुली नहीं कर सकता था. ठीक है, लाइक कभी भी हो जाता था एंड फिर उसके बाद लोगों को मारने लग जाता था जब वो ऐसा वो बीस्ट बन जाता है. ठीक है, दैट वाज स्टिल बेटर देन इसका सुपर पावर. लाइक शो में सुपर पावर्स नहीं है इफेक्टिवली, बट स्टिल बेटर कंपेयर्ड टू सुपर हियरिंग. कॉज लाइक जब तक ह्यूमन फॉर्म है तब तक तो मस्त है लाइफ. ठीक है, उसके साथ बेसिकली वही ऐसा मून नाइट वाला सिचुएशन होता था कि वो कभी भी ट्रांसफॉर्म हो जाता था एंड उसको याद नहीं रहता था कि क्या किया उसका. सो बॉलीवुड मेड अ मूवी अबाउट इट. इट्स कॉल्ड भेड़िया. हाँ, एक मिनट, भेड़िया इसी पे है क्या? इम्परफेक्ट्स पे? इसमें सबके पास पावर नहीं है. इसमें सिर्फ द गाय टर्न्स इनटू अ भेड़िया. अच्छा, वेयरवुल्फ टाइप का सीन. तो वही सिचुएशन होगा इफ यू हैव ऐसा ट्रांसपेरेंट माइंड रीडिंग. सबको सुनाई देता रहेगा एंड नहीं बहुत नहीं हो जाएगा. एटलीस्ट वो ऐसा नॉइस कैंसलेशन हेडफोन पहन सकते थे. ये तो you can't. There is no off button. There is actually. There is a solution. Shush. Not say that. We will be banned. Cut that out. There is a... Beep it. You have to edit. मैं अपने आप को याद दिला रहा. मैं पूरा. Just to as a survive,
just to be sane, you have to be high all the time. Simple. गांजा फूक के बैठो हर टाइम. But that doesn't stop your thoughts. That हाँ, but like brain activity slow हो जाता है. Normally चीजें process नहीं कर रहा. So it's like अभी इतना ओवर स्टिमुलेटेड है तो like so नॉर्मल इंसान अगर जब हाई होता है तो बहुत स्लो हो जाता है. that can backfire very easily. नहीं, एक बैड ट्रिप चाहिए और फिर गेम हो जाएगा, वो बात अलग है. Yes. But there's a high chance कि like खुश भी रह सकते हो. We do not condone the use of. You need to put a disclaimer here. If you have ऐसा telepathy or mind reading, फूको. If you have telepathy, read my mind. You know my opinions. Yes. I'm not saying it. Because India में street illegal है. हाहा. Anyways. यार हाँ है. Do you think अगर ऐसा like superpowers actually let's say available हो गया, kind of like you have to purchase, let's just say. Do you think government ban कर देगा? What? Superpowers? Some people, normal people can't have it, like it's just for military use or anything. And फिर इंडिया में लोग फिर like कहीं पे भी लोग ऐसा फिर black market के थ्रू gambling कर करके वैसा सीन कुछ हो जाएगा. स्मगल होगा, मस्त स्मगल होगा. See, that would be terrifying. If there's anything जो गवर्नमेंट बैन कर रहा है वो स्मगल होगा, डेफिनेटली होगा. Because thing is, जब बैन कर दिया, you have made a specific market with the like specific players कि like तुम registered sellers हो, तुम ही बेच सकते हो, you are registered buyers या फिर you are the applicable buyers, ठीक है, तुम ही ले सकते हो. तो उससे बहुत कंट्रोल हो जाता है प्राइस. ठीक है, so people would smuggle सस्ता करने के लिए. Yeah. Also when you restrict a commodity, ऐसा तो वो होता है ना, people want what they can't have हमेशा. Once you restrict something वो तो चाहिए. साइकोलॉजिकली जा रहा है तो पता लगे. बच्चे वाला टेंडेंसी तो कभी नहीं निकलता. मना कैसे कर दिया? मना कैसे कर? तेरा भाई भूखेगा आज. नहीं कोई नहीं भूखेगा, कोई कुछ नहीं करेगा. अगर कोई कर रहा है तो प्लीज shush. Don't contact us. There's a kind of coffee जो मेरे को चाहिए. I know what you're talking about. We talked about that. मिलेगा. If you know the place, right person, right place, सब कुछ मिल जाएगा. Why are we advertising this? Cut. अच्छा last okay final question. ये typical ऐसा बम्बल का prompt. If you could have any power, not ऐसा 3-4 जो भी we had, actually something, what would you choose? And उसके बाद I think we'll just end this episode. Superpower which I would like to have. Superpower or any power that you think would ease your life थोड़ा बहुत. Because I don't think ऐसा superhero complex इसी में है. मेरे को दुनिया का भला करना है. I'll tell you what I have written. ठीक है, कमल में actually is like ability to deafen myself on command. जैसा Discord पे होता है ना, you can ऐसा deafen yourself. Mute भी हो जाता है, deafen भी हो जाता है, and then you can undeafen. Yes. ठीक है. So मेरे को वो चाहिए, but IRL. ठीक है. And if you have noise cancellation, give me the ability. Basically तुमको चाहिए ना on command. हाँ. Okay. Yes, noise cancellation. मतलब अब ठीक है, what you consider noise वो बात अलग है. Sound cancellation. Better. कोई बगल में बोल रहा है मेरे लिए, वो भी नॉइस है कभी कभी तो. हाँ, I understand. बगल में बोल रहा है तो ही वो नॉइस है, थोड़ा दूर रखे बोलो. If you give me ऐसा admin privileges, बाकी लोगों को भी डिफेंड कर सकता है. ओहो, मजा ही आ जाएगा. Oh, okay. That is interesting actually. Nice. Like मैं so Discord पे हम लोग like usually कोई जब बहुत ज्यादा annoying होता है
ठीक है, उसको हम लोग यूजुअली वी नो कौन होता है, बट ओके, हाँ, गो ऑन। हाँ वही, उसको मोस्टली हम लोग म्यूट करते हैं, कभी कभी डेफिन कर देते हैं, बस लाइक दूसरे को डेफिन करने में देयर इज नथिंग यू आर गेनिंग, ठीक है, अनलेस एंड अनटिल तुम बिचिंग कर रहे हो उसकी और तुम उसको सुनाना चाहते, ठीक है। सो इफ यू गिव मी ऐसा प्रिविलेज कि मैं किसी को भी डेफिन कर सकता है, मैं रैंडमली किसी को भी ऐसे ट्रैफिक में डेफिन कर देगा बस 15 मिनट के लिए, जब तक रेड लाइट है। यू विल क्रिएट इतना chaos ना। ठीक है, बहुत मजा आएगा। तेरे को मजा आएगा, जो डेफिन हुआ है उसका जिंदगी बर्बाद हो जाएगा 15 मिनट के लिए वहां पे। ठीक है, सी मोस्ट ऑफ द पीपल हैव ऐसा ईयरफोन्स हेडफोन्स अभी आजकल, ठीक है, देयर इज अ हाई चांस उसको पता भी नहीं चलेगा कि उसके साथ कुछ हुआ है, ठीक है। I'm just imagining you are walking through the streets, बंदे कार में बैठे हुए हैं and you're like टोबे वगैरह उसी तरह स्पाइडरमैन 3 में डांसिंग अक्रॉस द स्ट्रीट। यस, डेफिन करते लोग को clapping your hands, but that Yep. is, yes, that is amazing power to have. I actually like it. Interesting. I would just say मेरा, if I was given the power to choose anything, I would just go with yes. probability manipulation. That Basically that stuff. Hakari. You can say Hakari. You can say Domino from Deadpool 2. Domino. बस मेरे को, I just want to be that person that is always lucky, that can manipulate the probability of anything around himself, and it would just make me it just make my life a bit easier. Itsy bit. मेरे को ऐसा कुछ भयानक काम नहीं करना है, just want the ease of life, बस और कुछ नहीं। हाँ, oh, so basically you want ऐसा better odds, or just ऐसा always favorable always favorable odds. There is no better odds. If anything is happening, it's in my favor. Someone is getting the last ticket, it's me. So you want to be just lucky, no? Yes, I'm lucky. Hold on. So probability manipulation में you have the control over your odds या फिर anyone's? नहीं, just any event that involves me. मैं दुनिया का कुछ चेंज नहीं कर रहा है, natural flow. I want natural flow because I am in the way of natural flow. But yeah, I can't interfere with ऐसा एप्पल का स्टॉक्स इतना गिरेगा मैं उठा लेगा, नहीं, वो सब नहीं। Simple. Like simple things. Effectively zero sum game है, तो like you are affecting others, but ठीक है। सर नहीं, again we are not deep diving into my super. Maybe someday else we'll do that. But आज के लिए I'm getting notification from Duolingo for my Russian practice. Not now, buddy. Oh, nice. Hold on. If just one. Yeah. If you have the control over other people's luck, oh, क्या ही मजा आ जाता। At that point, I will be a super villain. ठीक है, I have no shame in saying it. मैं दुनिया बर्बाद कर देगा। हंसते मेरे को ऐसा स्पेसिफिकली 5-6 लोगों का दुनिया बर्बाद करना है बस, सबका नहीं, बट there is a priority list, ठीक है, I agree. But उसके बाद में रुकेगा नहीं। I can already see myself enjoying बहुत ज़्यादा, तो don't give away too much information that that's control. Yes, would be fun. Yeah. So with that, I think that was a fairly good discussion of why you don't want superpowers or why maybe you want them. We are not here to judge you, but we are here to judge you. That's the क्या बोल रहे हैं? Yes. Yeah. You need coffee. I need. Thank you for listening to the podcast, people. If you listen to this complete episode, amazing, मजा आ गया because बहुत लंबा था ये. But yeah, thank you for listening.
we'll see you in the next one. Make sure you follow the podcast, hit the bell, ring, कुछ तो होता होगा Spotify पे. It makes you see the notification when we drop the new episode. I think it's just follow. Like if you follow, you get the notification. I think there is an option to do the notification thing अलग से follow के अलावा भी, because let me see. I will check. There's a bell. Yes, there is a thing. There's a bell. Yeah. घंटा बजाओ. And हम लोग चलते हैं. We'll see you in the next one. Bye bye. Bye.